वेलकम बैक गाइज। पिछली वीडियो में हम लोग एक स्ट्रेंजर गाय से मिले थे जिसका नाम है डेन। एंड पता है क्या, मुझे अब तक लग रहा था ये हमारी पुरानी कोई क्वेस्ट होगी, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये तो नई क्वेस्ट है जो नए अपडेट में आई है ना, वो है। एंड इंटरेस्टिंग है बहुत। पिछली वीडियो में डैन ने हमें स्टॉर्म टेरर लेयर पे बुलाया था एंड वो कोई तो स्पेशल वाला अभ्यास है उसके पीछे है। अब वो कौन है क्या पता। उसे ही पता वो। चलो वहाँ पे चलते हैं एंड इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स मूव ऑन। ये मैं चला स्टॉर्म टेरर लेयर में। चलो ये देखो यहाँ पे खड़ा है ये डेन। वैसे डेन पायमन ने बोला था उसको। एंड देखो मुझे एंडोरा भी मिल गया है, ये नया इवेंट था ना उसमें से। ये भी सही है। ओए डेन, यहाँ पे है क्या वो? I've heard about what happened to you during Mondstadt's crisis. When you came, this place was known as Storm Terror's Lair. Yes. But I suppose that this place is more lair than Storm Terror at this point. अच्छा। In fact, if my memory serves, this ruin has had largely nothing to do with that dragon for a long time. हाँ ये भी सही है। The first time I laid eyes upon the ruins of old Mondstadt, the dragon of the east had yet to fall. हाँ? Much less come to nest in this place. हाँ वो हम क्लीन करते रहते ना इसलिए। Huh? But Paimon remembers that Devalin first got in trouble hundreds of years ago. हाँ वो ये इतना पुराना है क्या? Don't think too much about it. अरे ये कुछ खुफिया है डैन। Do you remember the light actuators that once sealed this ruin? क्या पता? If the Abyss Order is interested in this location, then they will not neglect those mechanisms. अच्छा वहाँ पे चलेंगे फिर। Let's go see what the situation is at those light actuators. ठीक है ठीक है। कौन से लाइट एक्टिवेटर, किसके बारे में बात कर रहा है ये? मुझे पता होगा मैकेनिज्म वो, लेकिन नाम भूल गया मैं। चलो सीधा अंदर चलते हैं फिर। ये क्या टेलीपोर्टर है ना? वो डेन, अच्छा ये वाला, ये तो हमने ही किया था। ओह हाली चीयर्स। There are lots of monsters gathered over there. यस चलो उसको पेटना है हमें, बस यही करते रहते हम आजकल। Enhanced animal levels. Speak with sword comes shadow. और कैसा लगा? पहले इसको पहलते चलो। अरे शिट, गायब हो गया। कोई नहीं। वो नीचे मत जा। हाँ। अरे लो नीचे चला गया ये। हैं अब और आगे? मुझे लगा इतने में हो जाएगा। अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही आगे। आ जाओ सब एक इकट्ठा। हाँ ये सही है। लो लो लो। Midnight Phantasmagoria. अरे ये कब आ गया? Nowhere to hide. Speed of light. Absorption test. लोल। अरे इसके चिल गई, इसको मारते हैं चलो। अरे ये इसने फंसा दिया था मुझे। जल्दी से आ जा। यस Everybody stand back. Speed of light. Nowhere to hide. Don't blink. Oh, it's As you wish, mein Fräulein.
अरे कितनी हेल्थ है इनकी। Cut to the chase. Don't blink. मर गए। अच्छा इसने शील्ड बना ली, कोई नहीं, आजा। Everybody stand back. Speed of light. Don't blink. हो गया। बस इतने ही थे। डैन हमने फिनिश कर दिया सबको। We still couldn't find that Abyss Herald. Bummer. It is quite a shame, yes. I wouldn't call not having to gaze upon such a creature a shame exactly. हैं? क्यों? Still, I do believe that you will come across one eventually. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। No, You are you're right. right. If it's a really powerful monster, it would be best to go around it. हाँ ये भी सही है। How good it would be if all perils one encounters in their journeys could simply be solved by going around them. हैं? You seem to be familiar with journeys. Speaking from experience, are we? हैं? Once upon a time, yes. I simply have experience from adventuring together with that traveling companion. को नाम क्या है उसका? You know, Dane, you keep talking about that person this and that person that. हाँ नाम ही नहीं बताता ये। Where are they now, anyway? She बोल बोल। no longer travels. हैं? क्यों? I'm afraid that traveling can be too exhausting at times. नहीं नहीं ऐसा थोड़ी, हम नहीं थक जाएंगे कभी। Oh, is that how it is? Well, why are you traveling alone then? बेचारे को कोई कंपेनियन नहीं मिला होगा। I still have some things left unfinished. Once they are done, I too will return home to rest. अच्छा ठीक है ठीक है। Yep, and it's good to have a home to come back to, isn't it? We camp out a lot when we travel. Yes. Hey, once you find your sibling, we should find a place to stay too, shouldn't we? अरे नहीं पाया मन, इसके बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं हमने कभी। Mondstadt's Fisherman's Toast is pretty tasty, but Liyue's one-man restaurant is great too. अरे रह लेंगे हम, कभी यहाँ कभी वहाँ ऐसे। Either way, we should settle down in a place where there's good food. Okay. Getting a bit ahead of ourselves. I think. Home. क्या हुआ? Well, it won't be too late to think about where you stay once your journey reaches its end. ठीक है डैन लीव। While you're still traveling, you should... हैं? क्या? I sense something familiar. Oh, that cliff. क्या? What's familiar? I felt it for normal the precious time we come here too. हैं? A familiar feeling, you say? It could be someone you know well, or perhaps a monster. Could it be the abyss? Whichever it is, we should see it for ourselves, and thus see clearly. ठीक है। We can reach the top of that cliff from over there. Let's go. ठीक है। अरे कौन सी किसकी स्मेल आ गई इसको? I mean मुझे। Dane moves really fast, doesn't he? कहाँ पे गया? Let's use that wind current nearby to catch up. अच्छा चलो। यहाँ पे हवा है, ये देखो वहाँ पे है। भाई मैं ना ट्रैवलर लेता हूँ। ये सही है। अब ऐसा लग रहा है कि हम स्टोरी से जुड़े हुए हैं। और ट्रैवलर आई मीन ऑथर, ये जाएगा क्यों वहाँ पे? आई मीन इतनी ऊंचाई पे। जा तो रहा है। बहुत ऊंचाई कर दिया इसने तो। तो यहाँ पे आने में कुलस भी था एक। चलो छोड़ो। डांस लीफ यहाँ पे क्या है? हैं? Can you still sense that familiar feeling that you spoke of earlier? It's nearby. क्या? But it doesn't feel like there's anything around here. No monsters. No people, nothing. people, nothing. कुछ भी नहीं यहाँ पे। Indeed. There doesn't seem to be anything strange about this place. It doesn't look any different from the last time I was here.
लास्ट टाइम यू से हैं? My traveling companion brought me here on our previous journey. अरे क्या बात कर रहा है ये, किस बारे में? So, Dane, what about you? What's your favorite place? हाँ बोल जल्दी से। Me? I no longer remember. अरे क्या क्या बोले इसको अब? I merely followed my traveling companion around on that journey. That's all there was to it. अच्छा ठीक है ठीक है। Huh? हाँ क्या हुआ अब? A ruin guard's footprint. A ruin guard was wandering around here? ठीक है डैन लिप, हम हैं साथ में, डोंट वरी। No peace to be found. Even for a single dandelion. अरे एग्जामिन डैंडलाइन है, कहाँ पे है डैंडलाइन? अच्छा ये है डैंडलाइन। वो पीछे क्या गाना बज रहा है? इस गेम का म्यूजिक ही ना सबसे बड़ी बात है, बहुत प्यारा म्यूजिक है। चलो एग्जामिन करते। हाँ डैंडलाइन है ये तो। वो इसको क्या हो रहा है? हैं? अरे ये तो वही सीन है। लोल अब क्या? ये सीन क्यों आया बीच में? What's gotten into you? You were just spacing out. दिस डैंडलाइन रिमाइंड्स मी ऑफ। और ये डेफिनेटली अपने सिस्टर को फील कर रहा है। कब से मुझे यही लग रहा है, पता है क्या? लेट्स सी। You mean your sister? हाँ वही। But how could that be? You only touched that dandelion for a second. यस द मोमेंट आई टच्ड इट। डैन डैन ही कुछ बता सकता है अब। Perhaps that dandelion bears some sort of scent that only you recognize. हाँ? As for why, has it perhaps experienced something related to you? क्या पता? You're saying some real confusing stuff. वही ना, कुछ समझ नहीं आ रहा। Doesn't get it at all. Regardless, I have to go to the bottom of Do not rush. हाँ क्यों? Vexation and anxiety are the enemy of rational thought. Okay. Your journey has only just begun, has it not? Yep. At least you now know that she is still on this world. ये तो सही है, हमारे बीच में ही मीन्स हमारी सिस्टर। At this time, the most important thing is the journey to find her itself. And I find her. I will Yes. find her, I mean. And this is something you must keep in mind as the meaning behind your journey. Yep, यही तो है हमारी जर्नी कब से। May you find your kin at the end of that journey. Well then, let us part ways here for now. हैं? You are leaving? क्यों? Already? क्यों? Only for now. Don't worry. We will meet again. अरे डैन, ये डैन तो चला गया। After all, I did take 500 mora and those 3 answers you gave me. Yes. अरे डैन चला गया मीन्स? लोल, ये तो कंप्लीट हो गई क्विस्ट हमारी। एंड 43 भी हो गया मेरा। अरे आर्कन क्विस्ट आ गई, ये तो सही है। सो हमें फिर से उसे बात करनी पड़ेगी क्या? गो टू द नियर एडवेंचरर। ओके चलो, मॉन्स्टाइल में जाना पड़ेगा फिर हमें। ओए लिव में, नॉट मॉन्स्टाइल में। ये जब भी लिव में आता हूँ ना मैं, बहुत लैग होता है मेरा डिवाइस। देखो कैसे हो रहा है। ओए गन्न्यू, ये गन्न्यू यहाँ क्या कर रही है? Yes, yes. They have the audacity to go after anything. The 7 dragons, gods. No ancient artifact that relates can escape their greedy ambitions. हाँ क्या बोल रही है लैन? Still, this time is different. Who do they think they are, going after the Abyss Order's treasures? अब्बिस ऑर्डर यहाँ पे भी आ गया। Oh, Traveler, it's you. Yes, it's me. Huh? गन्न्यू? Ganyu, what are you doing here with Lan? Do you have a commission you need to post? हमें दे दे, हम कर लेंगे। Hello. हे गन्न्यू, We were just discussing the treasure hoarders. हम भी पार्टिसिपेट कर सकते क्या? Yes. We were just saying how even the audacious treasure hoarders should know better than to mess with the Abyss.
हैं? It's just too evil. हाँ ये तो है, वो बड़े शैतान टाइप के हैं। But we recently received intel from the Ministry of Civil Affairs that two big-time treasure hoarders in Liyue and Mondstadt are planning some big joint operation. अरे वो एक हो जाएंगे, हमारा क्या होगा फिर? Two big-time treasure hoarders? हाँ कुछ समझा नहीं। Yes, they're known as Big Sis of the South and Raptor of the North. हैं? ये क्या है? Raptor! यस यस यस। Everyone remembers he tried to run away from Amber and Mondstadt. यप। But who is Big Sis of the South? Does Big Sis means the bossest people around? Is she boss the treasure harder refer to? Huh? You already know something then. I guess you must have crossed paths with the treasure hoarders many times before. अच्छा बॉस को वो कहते हैं क्या? You are correct. She's the head of the treasure hoarders in Liyue. ठीक है ठीक है। As I understand it, the treasure hoarders all call her boss. Okay. Some say that the god of thieves even bestowed a gift upon her for her exploits, making her Big Sis of the gods. But that's probably just a wild rumor. Anyway, the treasure hoarders discovered some previously unexplored ruins that the Abyss Order has been secretly guarding in the shadows. So जाए क्या हम उसमें? Despite how dangerous that makes it, all the treasure hoarders can think about is what kinds of treasure could be inside. So चलो ना वहाँ पे चलते हैं, They मजा have आएगा। already devised a plan. They will send out a decoy to divert the Abyss Order's forces away from the ruins, then send an expert thief inside to steal the treasure. अच्छा ये प्लान है उनका। To this end, Big Sis and Raptor have reportedly recruited a certain grand thief from Fontaine. Okay. Grand Thief? That's quite an impressive sounding title. Yes, बहुत डेंजरस सा लग रहा है। Oh, indeed. He is an extraordinary individual. Oh. The Grand Thief is highly respected in the treasure hoarders, in the same way that we adventurers look up to great adventurers. ऐसा है। Just like famous adventurer lies, just like great adventurer Stanley, huh? Ah, you met the living legend himself while you were in Mondstadt. Correct. Correct. The Grand Thief is someone just as renowned as him. ठीक है ठीक है। So, despite being relative big-timers in Liyue and Mondstadt, Big Sis and Raptor had to put in a lot of work to convince a thief of his status to come and personally oversee this operation. Okay, take a land. With the major changes in Liyue recently, the Ministry of Civil Affairs and the Millelith already have their hands full. They don't have any time to investigate rumors about treasure hoarder activity. तो हम करें क्या investigate? But anything related to the Abyss makes me feel like there is some unknown danger lurking beneath the surface. हम कर लेते हैं ना? So I decided to come to the Adventurers Guild to post a commission. Well, since I am here, I too understand the danger. नहीं मैं हूँ ना यहाँ पे। Leave this commission to us. Yes, हम कर लेंगे। Oh, thank you so much. Thank you गन्नू, हमें कमीशन देने के लिए। Good to see this in the hands of a reliable guild member. Well then, Good luck. Good luck. Thank you. the guild will take care of the details of this commission. ठीक है सही है ये तो। हाथों हाथ कमीशन मिल गया हमें। We will be returned. Wait, I feels like my sister will be back. I don't know why, but I feels. Go to the ruin. Okay. यहाँ पे कौन सा रुइन है? चलो चल के तो देखते। अरे ये तो खुफिया, ये यहाँ पे है, पहाड़ों में घुसा पड़ा है। इसमें जाना पड़ेगा हमें। ओके, लेकिन गाइज इस रूइन में जाएंगे हम अगली वीडियो में, क्योंकि ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे एंड इसको मैं सेपरेटली करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत टाइम के बाद ऐसी क्वेस्ट है जहाँ पे हमें हमारे सिस्टर की लीड मिली। लीड क्या, हमने फील किया उसको, आई मीन ट्रैवलर ने। सो लगता है मुझे कि ये क्वेस्ट में हमारे सिस्टर के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, इसलिए इसको हम आगे ही करेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।